Very good morning, ninth class. Today we will again continue with the DG part for your history book, chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. Last class में हमने rise and fall of Hitler already study कर लिया है. आज की क्लास में हम देखेंगे the Nazi ideology and the art of neat propaganda. ठीक है, नाजी प्रोपेगेंडा को स्टडी करेंगे. The Nazi ideology was rooted in Charles Darwin's theory of evolution. Darwin's theory stated that all living beings evolved from simple to developed. चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो क्या बताती थी कि ह्यूमन बींग्स जो है किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, किस तरीके से उन्होंने समय के साथ साथ जो है प्रोग्रेस करी है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, पहले कैसे थे और धीरे धीरे समय के साथ किस तरीके से जो है उनकी ग्रोथ जो है आगे बढ़ी है. ये इनकी थ्योरी थी. Hitler, however, adopted a racist view of the scientific theory. लेकिन इसने क्या करा, नाजी ने क्या करा, इसने सिर्फ उसका रेशियल व्यू उठाया, यानी कि जो नस्ल के बेसिस पे इसने क्या करा, उस साइंटिफिक थ्योरी जो कि बहुत प्योरली साइंस पे बेस्ड थी थ्योरी, उसको जो है इसने दूसरे ढंग से लिया और इसने क्या इसमें जोड़ा या इसने किस पोर्शन को उसमें से उठाया कि नस्ल के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे किस तरीके से लोग जो है डिवाइडेड है. ठीक है, तो इसने पूरी तरीके से उस थ्योरी को जो है चेंज कर दिया. He believed that the Aryan German race was a superior form of all races. क्या मानता था ये, जो आर्यन जर्मन रेस है वो सभी रेसेस से सुपीरियर है, सभी रेसेस से जो है आगे है. ठीक है, सबसे बेहतर है. ये अपनी रेस को जो कि थी आर्यन जर्मन रेस, इसको सबसे सुपीरियर मानता था. He wanted to exterminate weak, unfit people and encourage the stronger Aryan race to reproduce. During the 1930s and 1940s, Hitler's Nazi Party went about implementing various horrendous acts in the name of racial purity. ठीक है, रेशियल प्योरिटी के नाम पे बहुत सारे They carried जो है हॉरिफाइंग काम किए, बहुत ही ज्यादा मतलब निर्दय भरे इन्होंने जो है काम करे. ये लोग क्या करते थे, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते थे लोगों को चेक करने के लिए कि वो जो रेशियल क्राइटेरिया सेट है कि सुपीरियर रेस से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, उसको चेक करने के लिए लोग फिजिकल एग्जामिनेशन लोगों की किया करते थे. ठीक है, out physical examinations on live people to check whether they meet set racial criteria. Those who didn't meet the race criteria were annihilated. They implemented euthanasia programs in which thousands of disabled people were killed. यूथनेसिया प्रोग्राम क्या था स्टूडेंट्स, जिसमें ये क्या करता था, जो भी डिसेबल्ड लोग होते थे उनको मार देता था. ठीक है, ये इसका यूथनेसिया प्रोग्राम था. They set up sterilization centers where people considered physically or mentally unfit were forcibly sterilized. ठीक है, क्या करते थे, स्टेरिलाइज करते थे ऐसे लोगों को जिनको ये मानते थे कि वो फिजिकली या मेंटली जो है फिट नहीं है. ऐसे लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन दिया जाता था. Special reproduction farms were set up.
where Aryan men and women were encouraged to have sexual relations. The illegitimate children born on the farms would be the future of the German army. Hitler's other ideology was Lebensraum, which means living space. Can you guess for whom Hitler wanted this living space? Hitler wanted to expand Germany's territory such that all German Aryans could be concentrated in one place. In 1939, Germany invaded Poland because of the Lebensraum ideology. This is where the Lebensraum पॉलिसी क्या थी इसकी कि ये सभी जर्मन लोगों को जो है एक जगह उनको रहने की जगह देना चाहता था और इसी पर्पस से इसने क्या करा था, पोलैंड को जो है जर्मनी में इंक्लूड कर लिया था. undesirable people were kept. And mass murder. The Poles were considered subhuman. But the Jews were the main targets of the Nazis. Nazis stereotyped Jews as the killers of Christ. ठीक है, ये क्या बताते थे नाजी लोगों को कि नाजी लोग वही हैं जिन्होंने जो है क्रिस्ट की हत्या की थी. ठीक है, ऐसा ही ये जो है नाजी लोगों के बारे ये जो है ज्यूज के बारे में मानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने क्रिस्ट की हत्या की थी, तो हमें इनको भी मार देना चाहिए. तो मेन टारगेट नाजीज का कौन होते थे? जो यहूदी होते थे, ज्यूज होते थे. Then the Nazis presented the Nuremberg Laws of September 1935, which banned Jews from having any relation with Germans. ठीक है, जिससे क्या था, न्यूरमबर्ग लॉ ऐसा लेके आया था 1935 में, जिसने हर तरीके का रिलेशन जर्मन्स के साथ जो ज्यूज का था उसको बैन कर दिया था कि कोई भी ज्यूज जो है जर्मन के साथ किसी तरीके का रिलेशन नहीं रखेगा. All over, there were signs prohibiting Jews to enter places were commonly seen. ठीक है, दरवाजों के बाहर, कॉमन प्लेसेस पे जो है, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरीके की चीजें लिखी होती थी, ज्यूज नॉट अलाउड, कि ज्यूज यहाँ पे अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है. ये सब चीजें देखना वहाँ पे आम बात थी. Gradually, the Jews started being concentrated in certain areas called ghettos. ठीक है, गेटोस क्या थे? जहाँ पे गैस चैम्बर्स. Jews were supposed to wear the yellow star of David in order to be easily identified. The ghettos became poverty-stricken places. People starved and lived in inhuman conditions. Starved मतलब भूखे रह रहे थे लोग. Ultimately, the Nazis built death factories called concentration camps in parts of Poland. Concentration camp क्या थे? जहाँ पे लोगों को मारा जाता था. ठीक है, डेथ कैंप्स इनको बुलाते थे. ये concentration camps पोलैंड में इन्होंने बनाए थे. Jews were brought to these camps in goods trains. Here they were tortured and killed in large numbers in gas chambers. The Nazi mass killing of Jews, known as the Holocaust, is said to be one of the most horrendous of incidents in the history of the world. विश्व संसार की सबसे मतलब भयावह
पोर्शन को माना जाता है। ये जो होलोकॉस्ट जिसने किया था, हिटलर ने जो करवाया था, जिसमें लाखों की संख्या में ये ज्यूज को इस तरीके से मार देता था, जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के इतिहास का मतलब सबसे डरावना हत्याकांड रहा है। नाजी प्रोपेगेंडा क्या फैलाते थे? Can you imagine a group of people being compared to hundreds of dirty, disease-spreading rats? Do you know who made this comparison for whom? मतलब क्या था कि ये बहुत सारे लोगों को जो है, Nazis claim ये जो बीमारी फैलाने वाले चूहे होते हैं, इससे कंपेयर करते थे लोगों को, that Jews are like rats, which they explained in their propaganda film called The Eternal Jew. इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू, जिसमें ये क्या बताते थे कि ज्यूज जो है इन्हीं काले चूहों के जैसे हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। मतलब क्या करा नाजी लोगों ने, कंपैरिजन ज्यूज का किससे करा? इन बीमारी फैलाने वाले चूहों से उनका कंपैरिजन किया, और इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इन्होंने ये मूवी बनाई जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। Nazi Germany's Minister of Propaganda, Joseph Goebbels, insisted that the film be made. The film shows that the Jews had originated in Jerusalem. 4,000 years ago, they wandered away from their promised land to Egypt. They settled there, and thus their race was a mixture of the Far Eastern, Oriental race and the Negroid race. देखो क्या दिखाया इन्होंने इस मूवी में कि ये लोग जो है जेरूसलम से बिलोंग करते थे इनिशियली, लेकिन फिर ये लोग जो है अफ्रीका में जाके बस गए, इसलिए इनकी जो नस्ल थी वो क्या थी? एक मिक्सचर था दो कम्युनिटीज का। Thus, they were very different from the European race, which was pure. ये क्या मानते In थे? keeping with their tendency to कि migrate, जो यूरोपियन रेस है जो कि बहुत ज्यादा प्योर है, ऐसा इन नाजी लोगों का मानना था। तो ये लोग जो है इन प्योर नस्ल के लोगों से, यूरोपियन लोगों से जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है। Jews traveled to the Western world and found a hub in Poland and Russia. Finally, in the 19th and 20th centuries, as the world started getting more connected, they spread to all continents. The film drew a parallel between the migration of Jews and the migration of rats. इस मूवी में इन्होंने क्या दिखाया? जिस तरीके से ज्यूज लगातार पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट कर रहे थे, उनका कंपैरिजन दिखाया चूहों के साथ कि जिस तरीके से चूहे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। They stated that rats are parasitic animals that had migrated in hordes from Asia. By the 18th century, they had spread across the world in the same way as the Jews had. Also, the movie claimed that Jews appear very different from Germans, but they live in disguise, pretending to be Germans. These ideas created a widespread fear and hatred of Jews among the Germans. इस मूवी के बाद क्या हुआ? वाइड स्प्रेड एक नफरत फैल गई ज्यूज लोगों के प्रति, ठीक है? जो जर्मनी के लोग थे वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगे इन लोगों से, ज्यूज से, ठीक है?
As part of the propaganda, the Nazis used provocative images in newspapers, posters, and books. They mainly depicted the blonde-haired, blue-eyed Aryans as a superior race. Also, they warned Germans about the differences between them and the Eastern Europeans. How do you think Hitler was represented by the Nazis? आपको क्या लगता है कि हिटलर को नाजी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे? ज्यूज के प्रति तो ये नफरत फैला रहे थे, ठीक है, इस तरीके के मूवीज बना रहे थे, फिल्म बना रहे थे, पोस्टर्स बना रहे थे जिसमें ये दिखाते थे कि जो जर्मन रेस है, आर्यन जर्मन रेस है, वो सबसे प्योर है, सबसे जो है सुपीरियर है। अब हम देखेंगे कि हिटलर को ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। Hitler was portrayed as a savior of the Germans. This poster says, "Long live Germany." ये कैसे दिखाते थे हिटलर को कि ये जो है जर्मनी का सेवियर है, ठीक है, जर्मनी को जो है बचाने वाला है, ये लॉन्ग लिव जर्मनी, मतलब इस तरीके के पोस्टर लगाए जाते थे। And shows Hitler posing in a way that Jesus Christ was represented. जीसस क्राइस्ट की तरह जो है इसकी फोटो को रिप्रेजेंट किया जाता था, उसी पोज में ये जो है अपने पिक्चर्स, अपने पोस्टर्स बनवाता था। Also, Jews were demeaned in posters. This poster says, "The Jew, the inciter of war, the prolonger of war." मतलब ज्यूज को क्या दिखाते थे कि ये इन लोगों की वजह से ही युद्ध होता है, यही लोग जो है युद्ध को बढ़ावा देते हैं। This is an image from a children's book called The Poisonous Mushroom. The Jewish man is depicted as a child molester, luring children with candy. ठीक है, ये जो है ज्यूज को इस तरीके से दिखाते थे जैसे ये चाइल्ड मोलेस्टर है। बच्चों को जो है बुक में इस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलती थी जिसमें ये दिखाया जाता था कि ये लोग जो है बच्चों को जहरीली चीजें खिलाते हैं। चाइल्ड मोलेस्टर्स है बेसिकली ये जो ज्यूज लोग हैं। तो मतलब क्या कर रहे थे ये लोग, बच्चों के मन में भी ज्यूज के लिए जो है नफरत को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। ये लोग चाहते थे कि हर जो आने वाली जनरेशन है वो ज्यूज से इतनी नफरत करे कि जो ज्यूज है उनका नामो निशान ही खत्म हो जाए। When it came to the killing of Jews, the Nazis adopted different language. Hitler called the mass killings the final solution of the Jewish question. क्या कहता था ये? ज्यूज को मारना, जो ये मारता था उसको ये बोलता था कि यही एक फाइनल सॉल्यूशन है ज्यूज से छुटकारा पाने का। ज्यूज नाम की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा पाने का फाइनल सॉल्यूशन है उनकी हत्या करना। Of course, the Jewish question was the question of how to do away with Jews. Deporting people to gas chambers was called evacuation. And their death factories, the concentration camps, were called disinfection areas. जो गैस चैम्बर्स है उनको क्या बोलते थे? ये डिसइंफेक्शन एरियाज। मतलब पब्लिकली ये कहीं रिवील नहीं होने देते थे कि ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, किस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके का जो है ये लोग हत्या कर रहे हैं लोगों की। इस चीज को छुपाने के लिए इस तरीके के नाम, जब ये गैस चैम्बर में लोगों को डालते थे उस एरिया को ये बोलते थे डिसइंफेक्शन एरिया। ये लोग क्या कहते थे कि हम तो इनको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेड एट द टाइम ऑफ जोसेफ गेबलर्स? उसका नाम था द इटर्नल ज्यू। ये मूवी इन्होंने बनाई थी। व्हाट वाज द स्प्रेड ऑफ ज्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू? किसके साथ कंपेयर किया था? रेड्स के साथ। व्हाट डज दिस पोस्टर पोर्ट्रे हिटलर एज? हिटलर को किस रूप में दिखाया गया है? जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया है, अ सेवियर के रूप में। ठीक है,
व्हाट टर्म डिड हिटलर यूज फॉर द मास किलिंग ऑफ द ज्यूज? क्या फाइनल सॉल्यूशन बोलता था ये कि मास किलिंग जो ये कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर ज्यूज को मार रहे हैं, ये क्या है, एक फाइनल सॉल्यूशन है ज्यूज की प्रॉब्लम का, ठीक है, इस समस्या का हल निकालने का यही एक फाइनल जो है सॉल्यूशन है। इसी ज्यूज को मार के ही जो है हम इस समस्या से, समस्या क्या थी उनकी, ज्यूज लोग, ज्यूज जो थे, ठीक है, तो यहूदी जो लोग थे वही इनकी समस्या थे। तो ये इसका मानना था कि इनको ख़त्म करके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रेस है वो क्या है, वो जो है हमसे काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फीरियर है। इस रेस से इनको छुटकारा पाना है, तो इनको जो है ख़त्म ही करना पड़ेगा, ऐसी इसकी सोच थी। तो क्या करता था, ये गैस चैम्बर्स में उनको डाल देता था डिसइंफेक्शन के नाम पे, ठीक है, उनको स्टरलाइज किया जाता था। ये सारे काम जो है हिटलर ने किए। इन सब बातों का वर्ल्ड को कब पता चला, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार होती है, हिटलर जो है सुसाइड कर लेता है अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती है और लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में जर्मनी में क्या कुछ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये डिजी क्लास जो है इस चैप्टर के लिए ख़त्म होती है।